Word is derived from the word note. Now, unless and until you don't note something, you don't read it, you don't understand it, you don't observe it, there is no importance of using the word notice. So when we use this word notice, what do we understand by the term notice? It's a formal way of communication. Many a times it is printed, many a times it is written and published, many a times it is like uh, prepared by the different departments, shared via email, prepared by the different departments, and then we use the notice board to inform the students. So whenever you hear a word notice, that means it tries to attract the observation, it tries to attract the thought of the reader. अगर आपने नोटिस लिखा है तो ये याद रखना है, नोटिस फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। ये एक व्यक्ति के लिए लिखा जा सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल के लिए भी लिखा जा सकता है। हमेशा याद रखिए, नोटिस में जरूरी नहीं है कि हमेशा एक नए बात को ही प्रेजेंट किया जाए। Many a times you can share the information related to new items, or it can be related to different aspects. Like if it is related to somebody's death, if it is related to something which is lost, if it is related to bringing in different tenders, or even if you are willing to bring to the attention about the changes that you have made. So every now and then you will see different notices which you can read, which you can understand, which you can act upon. So please understand that when we say notice, notice is a formal way of communication targeted either to one single individual or to many. Sometimes you may inform about the new item, or it can be related to any event, any kind of activity that you are planning to organize. Whenever we use the word notice, it can be also used to invite the people for certain meeting. It can be announcement related to certain event. It can be an issue related to any instructions that you are going to make or any appeal. Say for example, कोर्ट से भी नोटिस आता है, समन्स भेजे जाते हैं, तो वहां पर नोटिस का रिप्लाई देना होता है। इंस्ट्रक्शंस भी नोटिस के तौर पर आता है। अगर किसी इवेंट के बारे में आपको इन्फॉर्म करना है, तब भी आप नोटिफाई करते हैं लोगों को। कॉलेज से भी, जैसे आज शिल्पी मैम ने ई सेल के अंतर्गत एक बहुत ही ब्रिलियंट और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का गूगल मीट के थ्रू प्लान रखा है और शेड्यूल किया है टॉक। तो अगर आप में एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई इंटरेस्ट है, तो आप उस इवेंट को आराम से अटेंड कर सकते हैं और अपने इंफॉर्मेशन को और भी एनहांस और एनरिच कर सकते हैं। मैम ने आपके तक जो इंफॉर्मेशन शेयर किया वो भी एक तरह से नोटिस था। तो ये हमेशा याद रखें, नोटिस जनरली रिटन होता है, उसे डिस्प्ले किया जा सकता है पब्लिक प्लेसेस पर या ऐसे जगह पर जहां पर इजीली लोग उसे एक्सेस कर सके। कई बार नोटिस को नोटिस बोर्ड पर पेस्ट किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा नोटिस है तो नोटिस बोर्ड होगा ही होगा। न्यूज़पेपर इज अ बिग प्लेटफॉर्म। कितने लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखा है म्यूचुअल फंड्स को लेकर? सचिन तेंदुलकर का म्यूचुअल फंड, आईपीएल के टाइम पर आईपीएल के टीम मेंबर्स से रिलेटेड आपने देखा होगा, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कई सारे इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, कहां कहां पर इन्वेस्ट किया जा सकता है, वो भी एक तरह से आपको नोटिफाई करवा रहे हैं। तो नोटिस आजकल अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। गवर्नमेंट का भी हो सकता है, पब्लिक का भी हो सकता है। इसे न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर्स में पब्लिश किया जा सकता है, नेशनल पेपर्स में, और आज के टाइम पर वेबसाइट्स पर इंटरनेशनल लेवल के नोटिसेस भी शेयर किए जाते हैं। जैसे कहीं पर कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कहीं पर मीटिंग हो रहा है, आपने शायद सुन रखा हो जी समिट का मीटिंग होता है, सार्क मीटिंग होता है। इन सारे इंफॉर्मेशन को भी वो लोग कहीं ना कहीं वेबसाइट पर नोटिफाई करते हैं और लोग उसे समझते हैं, पढ़ते हैं। ये एक सैंपल है नोटिस का। आपके पास और भी कुछ सैंपल्स हैं नोटिस से रिलेटेड। अलग अलग तरह के नोटिस हो सकते हैं, इसको आपको याद रखना है। न्यूज़पेपर में जब भी कोई भी नोटिस पब्लिश होता है, वो एक कॉस्ट टेकिंग होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिश नहीं होता। तो
तो अलग अलग साइजेस का जो नोटिस पब्लिश होता है उसके अलग अलग कॉस्टिंग होते हैं। प्रोफेशनली आप सबको ये ध्यान रखना है, एज अ फ्यूचर मैनेजर जब भी आप लोगों को नोटिस पब्लिश करना होगा न्यूज़पेपर में, उसके साइज के हिसाब से कॉस्ट वेरी कर सकता है। तो इसीलिए कितना वर्ड लिमिट होना चाहिए, आप सबको याद होगा वर्ड लिमिट बताया गया था फर्स्ट सेमेस्टर में। क्या यहाँ पर कोई स्टूडेंट है जो रिमाइंड कर कर बता सकता है कि कितना वर्ड लिमिट होता है नोटिस लिखते में? वेरी गुड साक्षी, एक्सीलेंट, गुड गुड। 50 वर्ड्स। क्यों 50 वर्ड्स? क्योंकि जितना कम वर्ड होगा उतना ही कम स्पेस लगेगा और उतना ही पैसा बचेगा इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन का। तो जहां पर भी आपको अगर बड़ी लेंथी नोटिस नजर आ रहे हैं तो ये याद रखना उसमें लाखों का पैसा लगा हुआ है गवर्नमेंट का, क्योंकि वहां पर जो डीलिंग होता है वो करोड़ों में होता है। तो इसीलिए नोटिस हमेशा वर्ड लिमिट खोजता है ताकि कॉस्ट कटिंग हो सके। वहां पर लोगों का इंफॉर्मेशन भी जितना कम इंफॉर्मेशन होगा, जितना क्विक और इजी अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन होगा, उतना ही सरलता से लोग उसे समझ पाएंगे। तो इसीलिए जब भी हम नोटिस लिखने का बात करते हैं, फॉर्मेट का बात करते हैं, तो एक उसका फॉर्मेट, एक स्ट्रक्चर दिया गया है। लेकिन कई बार आपको स्ट्रक्चर के अलावा भी कई तरह के नोटिस नजर आते हैं। तो ये याद रखना है, हमने स्टेप 1 में पढ़ा उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है। अब स्टेप 2 में आप लोग आ रहे हैं जहां पर आपको प्रोफेशनली ये समझना है कि नोटिस का कोई एक रिजिड फॉर्मेट, रिजिड का मतलब फिक्स्ड, that notice should be written only in this given format. ऐसा कोई hard and fast rule नहीं है. You have to keep this in your mind that notices can be crafted as per the requirement of the organization. You can include lots and lots of information even in the notice if you think that they are very important, that it is going to catch the attention of the readers or the audience. You can include the word, but basic word limit is 50, which you people have rightly mentioned in the chat box. Now, there are different formats, as I said, which are used by various people, various organizations, and which may vary. If you don't believe me, you can turn the pages of the newspaper. If you see the newspaper, when you are flipping the pages of the newspaper, you will observe that there are certain private notices. There are certain public notices. Some notices are very small. Some notices are very big. They are lengthy ones. So it depends from organization to organization. It depends from person to person. Even it depends from cost to cost. पेजेस का भी वेरी करता है। अगर कोई नोटिस पेज नंबर 3 में है तो उसका कॉस्ट अलग होगा, पेज नंबर 8 में है तो उसका कॉस्ट अलग होगा, अगर फ्रंट और बैक में है तो उसका कॉस्ट अलग होगा। तो कॉस्ट का भी ध्यान रखना है आप लोगों को। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फॉर्मेट, each one of you should understand name of the issuing organization and authority will always come on the top. Whosoever is going to print, whosoever is going to write, whosoever is issuing that notice, their name will be always written on the top. Why? Because the reader must know who is issuing the notice. The reader must know who is the person, concerned person, or the authority that is issuing the notice. This is very important. Name of the issuing organization always comes on the top. Then comes the title. The title is like notice. What are you writing? You're writing notice. Why you should write the word notice? You need to draw the attention of the reader. क्या पढ़ रहे हैं? अब वो नोटिस है, मेमो है, एजेंडा है, मिनट्स ऑफ मीटिंग है, या आर्टिकल है, या किसी तरह का बायो है, किसी तरह का इंफॉर्मेशन है जो कि ब्लॉग है, कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए वहां पर सर्टिफाई करना ये वर्ड नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है आफ्टर मेंशनिंग द नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, बिकॉज इफ यू डू नॉट मेंशन द वर्ड नोटिस इन द न्यूज़पेपर or wherever it is published, it will not grab the attention of the reader. जैसे ही वर्ड नोटिस दिखता है लोगों का ध्यान इमीडिएटली उसके तरफ आकर्षित हो जाता है। जैसे ही वर्ड नोटिस नहीं रहेगा लोगों का ध्यान नहीं जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन द वर्ड नोटिस इन बोल्ड एंड क्लियरली, फॉलोड बाय डेट। डेट लेफ्ट साइड लिखा जा सकता है, राइट साइड लिखा जाता है, नो हार्ड फास्ट रूल।
You can write either on the left hand side corner or on the right hand side corner. Then comes the main heading, the purpose, the subject line of the notice. What is it that you are going to try to share with the audience? What it is related with? The information that you are sharing with the audience will come in the heading line, followed by the body part. When we say body part, we are trying to understand that after the heading, we need to mention what exactly the information is. What are the points that are mentioned in the notice? And unless and until you do not mention it, it will be difficult for you to take into consideration the important features of the notice. Writer's name is again very important thing. Whom to approach? जैसे नोटिस तो पढ़ लिया, लेकिन नोटिस पढ़ने के बाद अगर उसमें किसी को पहुंचवाना है कोई इंफॉर्मेशन, या किस तक हमें उस इंफॉर्मेशन को केटर करना है, ले जाना है, we need to identify that. And so therefore name and designation of the notice writer is very important along with the signature. So please remember, notice always tries to cover certain important points that are to be communicated to the reader. Let us understand what are those important points that we should keep in mind. The first WH family word, what. What is it that you are going to mention in the notice? कब होने वाला है, किस चीज से रिलेटेड है, क्लैरिटी के साथ. एम्बिग्विटी का मतलब होता है कंफ्यूजन. अगर कोई किसी तरह का कंफ्यूजन रहेगा तो वो चीज लोगों तक क्लैरिटी के साथ समझ में नहीं आ पाएगा और हम ना समझा पाएंगे. So it is very important to identify that whatever you're going to mention in the notice, it should be free from ambiguity. It should be clear, easy to understand, easy to interpret, easy to share. Even if people wishes to share the information, they should be able to share it or try to reach it to the other people. Notice also mentions about where, if we are talking about any event. अगर किसी event के बारे में है, मीटिंग के बारे में है, कोई किसी तरह का फंक्शन हो रहा है, किसी तरह का चीज को आयोजित किया जा रहा है, तो वो इवेंट कहाँ पर होने वाला है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी देना चाहिए. When, किस डेट पर, किस टाइम पर, ये भी मेंशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. And then, who are the people who are organizing it? This is the very important criteria. Many a times, if you mention about what, where, when, without mentioning about who, you are doing injustice with your notice. Why? Because people will not be able to approach to the right people and within the given time. So therefore, you need to remember who is very important, and then to whom they need to approach. This is the last but very important. Contact details, email address, address of the concerned person should be very clearly mentioned. And if you keep these things in your mind, it becomes very easy. I should say that writing notice will become an easy task. Always remember, try to keep it precise, to the point. The ideal length, as mentioned by you two, is 50 words. So the language that you are using should be very simple, straightforward, short, crispy. Formal way of communication never says don't use jargons, don't use flowery text, don't use unfamiliar words. Try to keep it as simple as short. Also remember that the information that you're sharing should be brief. Use always passive voice instead of using active voice, and make it in a proper format. Draw the box, क्योंकि जैसे ही हमने box बनाया, हमारा ध्यान उस बॉक्स के अंदर के इंफॉर्मेशन तक आकर्षित होता है. So finally, here is the sample of the notice. So I hope everybody, after attending this class, you could understand the importance of how do we write notice, what is the use of writing notice, and what are the common things that we have to keep in our mind while drafting the notice. If you have any doubts, I am ready to take up the questions and clear your doubts. Yes, please.